All right, so hi everyone, a very good morning to all of you, and welcome back once again to another class of government schemes. In today's class, we are going to cover another very important schemes from the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, and as you can see the name PMKSAN, which stands for PM Kisan Samman Nidhi, and then we are going to cover the Paramparagat Krishi Vikas Yojana. So these are the two very important schemes that we are going to cover today. Before we begin, please give me a thumbs up if you can see me properly and can hear me properly. Good morning, everyone. Please give me a thumbs up if everything is fine, if you guys can see me properly and can hear me properly. Yes, I think I have some thumbs up. So I will start the session without waiting for anybody else because कुछ लोगों की आदत हो चुकी है लेट आने की and I'm not gonna wait for them now. चलिए start करते हैं with परंपरागत कृषि विकास योजना. Now, as I always say that you don't have to remember the objective. So how we can derive the objective of this particular scheme from its name? What is the name? Paramparagat Krishi Vikas Yojana. Paramparagat means what? Traditional. Paramparagat means what? Traditional. And Krishi means what? Farming. So we are talking about traditional farming and how we used to do agriculture or farming in when we didn't have any when we didn't have any chemical fertilizers or pesticides or herbicides or germicides. So all of these came after the industrial revolution. Usse pehle when we just started the agriculture, when we just started doing the agriculture, how how किस तरीके से हम farming करते थे. Obviously the farming was done using the natural processes or the natural inputs, right? The farming was done using the natural inputs, and when we use the natural inputs, what type of farming is this? We can call it natural farming, right? We can in simple terms we can call it natural farming, and in technical terms we call it organic farming. ठीक है. So basically इतनी लंबी स्टोरी का मतलब ये हुआ. ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब है दैट वी आर the government is intent to promote the organic farming, and yes, that is the objective of this particular scheme, to promote organic farming through a cluster based approach. Now what is the meaning of cluster based approach? Here the benefit is not provided to a single farmer or maybe 2 3 farmers or a farmer family. No, the benefit is provided to a cluster which includes a number of farmers. उसके बारे में हम बात करेंगे. Providing end-to-end support from production to certification and marketing. Not only the government is providing support in the production of organic products, but also in the certification of organic products and the marketing of organic products that which are being produced by the farmers. It was launched in the year 2015-16, financial year 2015-16, under National Mission on Sustainable Agriculture. नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर इसको लॉन्च किया गया था. भाई पहले अगर आया हुआ विकास इस सेइंग की पहले ये स्कीम आई हुई है तो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है भैया. पहले कोई भी चीज आई हो, सोवरन गोल्ड बॉन्ड पिछले 4 साल से लगातार पूछ रहे हैं वो, तो क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं था? ऐसा नहीं है कि जो चीज एक बार पूछी जा चुकी है वो दोबारा नहीं पूछी जाएगी. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की फीचर्स. क्लस्टर बेस्ड अप्रोच. As I already told you, the scheme does not provide benefit to one farmer, 2 3 farmer, or a farmer family, or some farmer families. This scheme provides benefit to a cluster. Now this cluster consists of 50 or more farmers, 50 or more farmers covering 50 acres to practice organic farming collectively. ठीक है. ऐसा नहीं है कि ये एक एकड़ वाले फार्मर को जो है सरकार बेनिफिट दे देगी. नहीं, क्या हुआ, 50 मान लेते हैं, 50 ऐसे अलग अलग फार्मर्स हैं, उनके पास सबके पास एक एक एकड़ जमीन है, तो सबने मिलकर क्या करा, 50 एकड़ पे वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं. दे आर डूइंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग कलेक्टिवली. ठीक है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच. इट इंश्योर्स यूनिफॉर्म एडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस एंड सर्टिफिकेशन. ठीक है. इससे क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस आएगा, राइट. जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होगा. ठीक है. और सर्टिफिकेशन में भी आसानी होगी. ठीक है. नाउ देयर इज अ सर्टिफिकेशन सिस्टम. आई जस्ट टोल्ड यू कि सर्टिफिकेशन में भी आसानी होगी. नाउ सर्टिफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें मैं आपको बता देता हूँ. देयर इज अ certification system which is called as participatory guarantee system certification. Participatory guarantee system certification, PGS certification. ठीक है. ये जो PGS certification होता है, it is a process basically. It is a process of certifying organic products which ensures that
the production of farmers takes place in accordance with the laid down quality standards. ठीक है, बेसिकली जैसे एक ISI मार्क होता है वैसे एक PGS सर्टिफिकेशन है. ठीक है, PGS सर्टिफिकेशन क्या है? एक तरीका है, एक प्रोसेस है ऑफ सर्टिफाइंग द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. ठीक है, फार्मर ने देखो जितने भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हम बनाते हैं या कोई भी फार्मर प्रोड्यूस करता है उसको सर्टिफाई होना बहुत जरूरी है दैट यस इट इज ऑर्गेनिक. ठीक है, एंड दैट सर्टिफिकेशन इज डन थ्रू अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम. ठीक है, देयर इज अ प्रोसेस which is for the certification of organic produce that is called participatory guarantee systems, and the farmers in clusters get PGS certification reducing dependence on third party certification. ठीक है, और certification expenses का भी कोई liability नहीं होता है farmers पे, that is all borne by the government. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. Now, how much financial assistance the government provides under Paramparagat Krishi Vikas Yojana to promote the organic farming? First of all, 20 lakh per cluster of 1000 hectare. ठीक है, for 3 years are provided for value addition and infrastructure creation. See, let's say एक cluster बना लिया गया है 1000 hectare का. Now they want to they want to do the organic farming in this cluster. Of course, they need some value addition infrastructure. They need some different infrastructure. They need some input for that. So the government provides 20 lakh rupees per cluster for a period of 3 years. And the cluster size should be 1000 hectare. The cluster size should be what? 1000 hectare. ठीक है, and 31,500 per hectare is also provided for 3 years, जिसमें कि जो फंड की डिवीजन होती है वो इस तरीके से होती है. ये 20 लाख रुपए पर क्लस्टर से अलग है, और फिर 31,000 per hectare is also provided for a period of 3 years, and out of 31,500, 15,000 per hectare is provided for organic inputs. ठीक है, लाइक सीड्स हो गए, लाइक ऑर्गेनिक मैन्योर्स हो गए. ठीक है, 4,500 for marketing, packing, branding and value addition, 3,000 per hectare for certification and residue analysis, although do not require any money for certification, but still सरकार ने दे दिया कि अगर कोई और इधर उधर का खर्चा आता है, so you can use 3,000 per hectare and 9,000 per hectare for training and capacity building. ठीक है, these numbers are really very important. You have to remember all of them. 20 lakh per cluster of 1000 hectare for a period of 3 years for value addition and infrastructure creation. Then after that 31,500 per hectare for a period of 3 years. Out of 31,500, 15,000 per hectare is for organic inputs, 4,500 per hectare for marketing, packing, branding, 3,000 per hectare for certification, and 9,000 per hectare for training and capacity. Okay, I hope it is clear. Now, how this scheme, how the organic farming is promoted. So, the use of traditional organic inputs like Panchagavya, Jivamrut, Bijamrut. Okay, basically organic inputs. It encourages intercropping and mixed cropping to enhance the soil fertility. And once the soil's fertility is improved, we will not be requiring the chemical fertilizers to enhance the fertility of the soil. Okay, and thereby promoting the organic farming. Farmers are trained in vermicomposting, biofertilizer production, and residue-free cultivation. So the training and capacity building is also provided, where the farmers are provided training with regard to vermicomposting, biofertilizer production, and residue-free cultivation, and all of these are the part of organic farming. Okay, and of course, as I already explained you, the marketing and branding support is also provided, whereby the government is providing support for certification of organic produce through the PGS, through the participatory guarantee system. All right. And yes, there is a support for custom hiring centers as well. So, for example, let's say a cluster of farmers which has 20 lakh per cluster. Okay, and they fell short of money, and they need any particular equipment. Let's say. तो अब उनके पास पैसे नहीं है कि वो खरीदे. They don't have enough money to buy that particular equipment, so they can also take that particular equipment on rent through the custom hiring centers, and for that support will also be provided by the government under Paramparagat Krishi Vikas Yojana, right? And there is an organic village concept. Their entire villages are encouraged to transition to organic farming, and once a village is transitioned entirely, once a village
entirely produces the organic produce, right? Then that village will be called as, shall be, certified as organic village. ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? चलो आगे चलते हैं. To the impact of this particular scheme, increased organic farming adoption. Of course, when we are promoting the organic farming, it will obviously increase the organic farming adoption. There are some financial and market benefits, organic branding and packing assistance, okay? And of course, there are certain environmental benefits. These impacts you already know, but still, I will always provide you these impacts and outcomes because I know कि पता तो सबको होता है, लिखने की जब बारी आती है तो words नहीं आते. So just to put words in your mouth, I am providing these impacts and outcomes things. ठीक है? Although these are very easy to understand. These are very obvious. No, when we are promoting organic farming, of course, it will lead to increase in organic farming adoption. It will, of course, have some environmental benefits because we are reducing the use of chemical fertilizers and pesticides. And since we are reducing the use of chemical fertilizers and pesticides, it will lead to enhance enhanced soil fertility, water conservation, right? And yeah, as we already discussed, that the government is providing support through PGS certification, which means the government is helping in the branding of the organic produce as well. यही तो इम्पैक्ट है. ठीक है, जो पढ़ा है उसी को घुमा के लिख दो. ठीक है, इसी को तो कहते हैं कलाकारी. चलिए, नेक्स्ट स्कीम है पीएम विकास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. Wherever you find this word nidhi, nidhi means financial assistance. Nidhi means what? Financial assistance, right? Samman means respect. Samman means what? Respect, and kisan का मतलब तो आपको पता ही है. So which means one thing is pretty much clear, that under this particular scheme, PM Kisan Samman Nidhi, PM Kisan in short, the government is providing some kind of financial assistance, right? And is there any particular objective for that or not? Let's see. So to provide financial assistance to land-holding farmers across India, ensuring their economic stability and supporting agricultural sustainability. So there is no specific objective of this particular scheme. The government is just providing financial assistance to the farmers. That अब वो जो पैसा है उसको जो मर्जी यूज करो, आप, आपकी मर्जी है. ठीक है. It was officially launched in the year 2019. It was officially launched in the year 2019. लेकिन जो इसकी पहली इंस्टॉलमेंट थी वो 2018 में ही सरकार ने दे दी थी, दिसंबर 2018 में, राइट? अब ये कैसे हो गया था? ये ऐसे हो गया था क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे 2019 में, तो सरकार ने पहले ही पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया और उसके बाद ऑफिशियली इसको लॉन्च किया 2019 में, राइट? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन से किसानों को पैसा मिलेगा? विच फार्मर्स विल गेट द फाइनेंशियल असिस्टेंस? So remember, all land holding farmer families, all, irrespective of their land size, irrespective of their status, irrespective of their income, ठीक है, all land holding farmers families with cultivable land in their names are eligible. अगर आपके नाम पे खेती है, आपके नाम पे कल्टीवेबल लैंड है, तो आपको पैसा मिल जाएगा. अब ये मैटर नहीं करता कि आप स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, बड़े फार्मर है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फार्मर फैमिलीज है? फार्मर फैमिलीज का मतलब होता है वाइफ, चिल्ड्रन एंड माइनर्स. वाइफ, चिल्ड्रन एंड माइनर्स. अब मान लेते हैं कि एक फैमिली है जिसमें 4 बच्चे, नहीं 2 बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन 1, चाइल्ड 2. ठीक है. अब क्या हुआ? अभी ये दोनों माइनर है. ठीक है. तो ये क्या है? पूरी फार्मर फैमिली है और हस्बैंड के नाम पे पूरा पूरा लैंड है, और इसका फाइनेंशियल असिस्टेंस जो भी इस स्कीम के अंदर मिलता है वो इस फैमिली को मिल रहा है. ठीक है. नाउ लेट्स से क्या हुआ कि ये जो चाइल्ड 2 है ये 20 साल का हो गया, और इसके जो फादर थे, हस्बैंड, जो ये हस्बैंड था, इसने क्या करा? फादर ने इसके थोड़ा सा लैंड इसके नाम पे कर दिया. थोड़ा सा लैंड इसके नाम पे कर दिया. नाउ दिस चाइल्ड इज नॉट अ माइनर चाइल्ड, he is now adult. He is now adult, and there is a land in his name, so he will also get rupees 6,000 per annum as the financial assistance. और ये family जो अब हो गई, according to the definition, will be this husband, wife, and this child one who is still minor. ठीक है. I hope you get my point. So families include husband, wife, and minor children. Family इसकी definition पे NABARD में क्वेश्चन आ चुका है एक बार. So please, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, don't take it lightly. And of course, there must be a bank account linked with Aadhaar for direct benefit transfer. क्योंकि पैसा सरकार अब कैश में देना सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिया है.
There are certain exclusion criteria. There are certain exclusion criteria which are very important to be remembered. मुझे लगता है कि कभी भी अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो स्टूडेंट फंस जाएगा पक्का. दी पर्सन मस्ट नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर. भैया अब ये तो ज्यादती हो जाएगी कि अगर इनकम टैक्स पेयर जो है साल के 6,000 रुपए गवर्नमेंट से ले रहा है. इनकम टैक्स पेयर का मतलब क्या हो गया? 12 लाख से ऊपर इनकम है साल की. अगर आपकी 12 लाख से ऊपर इनकम है साल की एंड इफ यू आर स्टिल आस्किंग फॉर ₹6,000 per annum एज फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, बेकार है काम करना फिर तो. ठीक है, काम करना छोड़ दो. ठीक है, अब नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ कैन अ फार्मर बी एन इनकम टैक्स पेयर. सी व्हाट दे सेड, there should be a cultivable land in your name. For example, I am residing in Delhi and there is a land in my name in Bihar, okay, which is a cultivable land. So I can also get ₹6,000 per annum as financial assistance. But now since I am staying in Delhi, let's say my income is taxable. I am an income taxpayer. Then in that case, I will not be eligible. If my income is not taxable, then I can take ₹6,000, okay, as financial assistance because there is a cultivable land in my name. Alright. प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सी एक्सेट्रा. अब सोचो एक डॉक्टर जो महीने के लाखों रुपए कमा रहा है, 6,000 रुपए लेते, कैसा लगेगा? सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पीएससीज विच एक्सक्लूड एमटीएस क्लास 4 एंड ग्रुप डी एम्प्लॉइज. देखो जो भी सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के या पीएससी के, दे आर नॉट एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट्स. हाउएवर एमटीएस क्लास 4 एंड ग्रुप डी ऑफिसर्स कैन अप्लाई फॉर द बेनिफिट्स अंडर पीएम किसान. ठीक है. All superannuated or retired pensioners whose monthly pension is 10,000 or more. अगर मंथली पेंशन 10,000 या उससे ज्यादा है तो the person is not eligible. Here also MTS class 4 and group D employees are excluded. यहाँ पे भी जो MTS class 4 और group D के employees है वो excluded है, right? Former and present holder of constitutional post. अब सोचो प्रेसिडेंट जाए 6,000 रुपए लेने के लिए, कैसा लगेगा, right? Former and present ministers in central and state governments, present MPs, MLAs, MLCs, and former and present chairperson of district panchayat. So these category of people are not eligible to get the benefits under PM Kisan. Chali. Financial assistance, I already told you 6,000 annually in 3 installments of 2,000 each, and funds are transferred directly to the farmer's Aadhaar seeded bank account. There is automated and digital implementation of PM Kisan scheme through PM Kisan portal and mobile app, which allows farmers to self-register, track payments, and update the beneficiary details. There is an AI chatbot Kisan e-Mitra which was launched in 2023. This chatbot helps the farmers with real-time query resolution, with real-time doubt resolution. जो भी उनकी दिक्कत है, परेशानी है, all doubts are clarified through the AI chatbot Kisan e-Mitra. And there is a face authentication feature that was also introduced in 2023 so that there cannot be any fraud in the direct benefit transfer in the effective implementation of this scheme. Okay, and now the scheme is also linked to the credit card, Kisan credit card. The farmers under PM Kisan can easily apply for Kisan credit cards, and because the government now has data through PM Kisan, so the government will not have to verify that whether this person is actual farmer or not. So it will be easy. जो ऑपरेशनल साइड है केसीसी का, किसान क्रेडिट कार्ड का, वो इजी हो जाएगा. ठीक है. That's all, my dear friends, for PM Kisan as well. I hope both the schemes are clear. If you want to have the PDF of this class, do join the Telegram channel PIB by Manish Sir. If you are not able to find this channel or the PDF, so please DM me at Mashi Manish, MASHY, right? And we are running a booster batch. अगर आप लोगों को तैयारी करनी है क्योंकि एग्जाम आने वाला है, so to give a boost to your examination, you guys can enroll in the batch using the coupon code Manish. चलिए, if you have any doubts, you can ask me. Otherwise, give me a thumbs up. इसको बंद कैसे कराते हैं 6,000 रुपए को? आप एक एप्लीकेशन लगा दीजिए अपने लोकल ऑफिस में, वहां पे वहां से फिर बंद हो जाता है. ठीक है, या पीएम किसान पोर्टल पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं. एनोटेटेड पीडीएफ नहीं मिल सकती शालिनी, वो इसलिए नहीं मिल सकती, आप समझिए एनोटेटेड पीडीएफ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है. जब आप इन पीडीएफ को बना के कंपाइल करके पढ़ोगे ना, तो ये एनोटेटेड पीडीएफ बहुत ही अजीब और बहुत ही
डिस्टर्बिंग हो गया आपके लिए पढ़ने के लिए। आपको लग रहा है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं। क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको इसके अंदर? ये अंडरलाइन ही तो है सारी चीजें। एनोटेटेड पीडीएफ ना देनी पड़े इसीलिए मैं सब कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। आई एम नॉट लाइक अदर्स कि वो लिखते ही नहीं है, कि वो लिखते ही नहीं है टाइप करके। यहाँ पे देखो सब कुछ तो लिखा हुआ है, आपको क्या चाहिए? इस पीपीटी पे देखो क्या एक्स्ट्रा क्या लिखा है मैंने। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस लिखा है, ये दिसंबर 2018 लिखा है, क्या लिखा है? सब कुछ तो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है ना। व्हाई डू यू नीड द एनोटेटेड पीडीएफ? क्लस्टर वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ शुभदीप भैया? क्लस्टर वाला पॉइंट का मतलब ये है शुभदीप जी, जो सरकार है इस स्कीम के अंदर एक किसान को फायदा नहीं देगी। ठीक है, मान लो कि मैं एक अकेला किसान हूँ और मैं यहाँ पे ऑर्गेनिकली कोई एक्स क्रॉप उगा रहा हूँ, गवर्नमेंट विल नॉट गिव बेनिफिट टू मी। अब हमने क्या करा, यहाँ पे बहुत सारे किसान थे, हम सबने मिलके ग्रुप बना लिया, ठीक है, और अपने सारे खेतों को कंबाइन कर लिया। ठीक है, अब इन खेतों में कलेक्टिवली हम ये एक्स क्रॉप जो मैं अकेला उगा रहा था ये हम सब उगा रहे हैं। ठीक है, इस ग्रुप का मिनिमम साइज कितना होना चाहिए? 50 फार्मर का, और मिनिमम लैंड साइज कितना होना चाहिए? 50 हेक्टेयर का। तो ये जो एक लैंड साइज बना है, ये जो ग्रुप बना है फार्मर्स का, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर बोलते हैं। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है। ठीक है, लोन नहीं है वो, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, सरकार यूं ही दे रही है, जाओ मौज लो। Sir, is there any chance to get RRB Scale 3 course for financial awareness? No, bro. I don't think so. चलिए, फिर I'll see you in the next class on Monday. Till then, keep studying and keep studying hard. Goodbye, take care, and God bless.